on the back of that, I got some extra budgets, almost $1.5 million, which was 7-8 crore rupees in those days. कि इसको एक्सटेंड क्यों नहीं करते, अच्छी कैंपेन चल रही है, सो व्हाई डोंट यू एक्सटेंड दिस. ठीक है, मतलब अप्रैल, मतलब ये फेब मार्च में हो गया था, अच्छा कैंपेन चल रहा है, बहुत वी वर ग्रोइंग वेरी वेल. तो मैंने लगा कि अप्रैल आई तो क्या होता है, तो मैंने कहा यार आईपीएल, राइट, एंड आईपीएल टुडे भी है, लेकिन उस वक्त भी इट वाज बिकमिंग द सिंगल लार्जेस्ट मीडिया प्रॉपर्टी. मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. मैंने व्हेन आई थिंक वी वर द फर्स्ट डिजिटल प्लेयर टू गो ऑन आईपीएल. मार्केटिंग एंड ग्रोथ जो है ना, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा है या फिर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, राइट. बट ग्रोथ में जो टूल्स एंड स्ट्रेटजीज है, ये ना मैसिवली चेंज हो रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स से. अभी जो है चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, दैट हैज आल्सो स्टार्टेड टू चेंज थिंग्स एज वेल, राइट. बट क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, क्या ऐसी थिंकिंग है जो कंसिस्टेंट है एंड एवरग्रीन है. ऑल्सो हाउ टू मेजर मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर. टीवी एंड मीडिया मार्केटिंग से मैक्सिमम ग्रोथ कैसे निकाले. ये एक ऐसा टूल है जिसका कॉस्ट पर रीच सबसे लोएस्ट है. How OLX was able to beat quicker with 1/10 of the resources, but with brilliant growth strategies. Brand कैसे बनाए, and also how to launch new products. But not just that. Also, how did India's attack on Pakistan in Balakot and Uri, how did that impact companies and marketing campaigns? So today we are talking to Gaurav Mehta. He has been leading growth and marketing for multiple companies in the past. He has been CMO 4 पॉपुलर ब्रांड्स के लिए, OLX, CarDekho, Zupee and अब Noise. Gaurav will discuss some of the craziest stories from his days as CMO in these companies, from failed campaigns to cracking South Indian geographies. ये एपिसोड मिस मत करना. अपनी लाइफ में आई हैव नेवर हैड अ मोर कंडेंस्ड एंड थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन ऑन ग्रोइंग अ कंपनी. एंड तक देखो. And also, it would mean a lot to me if you subscribe to GoVenture channel at this point. Hey Gaurav, welcome to the podcast. Hey, hi Pritesh, how are you? Good, I'm good. So Gaurav, मैं पहला सवाल आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ. You've been CMO for OLX, CarDekho, Zupee and अब Noise, right? To start with, I want to model the first 15 minutes as a master class कि ग्रोथ कैसे मैनेज करें न्यू एज कंपनीज के लिए, राइट. क्या की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं दैट हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपके लिए थ्रू आउट योर कैरियर. यार मैं शायद डिजिटल में आई गॉट इन वेरी अर्ली. मतलब जब डिजिटल शुरू हो रहा था इंडिया में तभी घुस गया था. मतलब प्रायर टू OLX मतलब मैं याहू में था 2008 से. तो जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें मतलब कि आप डिजिटल में ही बताया, तो मतलब वो थोड़ा सा एक your point of view as a growth professional or as a marketing professional changes from what theory taught us. मतलब थ्योरी में वो होता है कि भाई मार्केटिंग एक जने को पकड़ के लाएगा, फिर सेल्स कन्वर्ट करेगा, फिर पोस्ट परचेज किसी और का डिपार्टमेंट होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन मुझे लगता है कि ये जो न्यू एज कंपनीज और ये जो न्यू डिजिटल एज है, इसमें मार्केटिंग इज स्पैनिंग फ्रॉम टॉप टू एंड ऑफ द फनल. तो यहाँ पे मार्केटिंग टॉप एंड ऑफ द फनल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और आपका PNL फ्रॉम बॉटम लाइन पर्सपेक्टिव भी पूरा मैनेज करता है. तो आई थिंक मुझे जो लगता है, मैंने जो पिछले 15-1 साल में मैंने डिजिटल में जो सीखा है, आई वुड से दैट ग्रोथ एट ऑल टच पॉइंट्स इज द थिंग दैट कैन मेक यू अ गुड मार्केटर. आई गिव दिस थोड़ा सा डिटेल में. मतलब कि आप मार्केटिंग करते हैं, लोग आपकी साइट पे, आपके ऐप पे आते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन आपको प्रोडक्ट की भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए. यू शुड हैव मेड श्योर कि आपका जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, आपका जो UI UX है और प्रोडक्ट पे, that is promising the same thing जो आपने अपने मार्केटिंग मैसेज में दिया है. कन्वर्जन पेजेस कैसे हैं आपके, कन्वर्जन होने के बाद आपका पोस्ट परचेज कैसा है, आप अपने कस्टमर सपोर्ट टीम से भी उतनी देर तक बात कर पा रहे हैं या फिर आप नहीं करते हैं. सो मेरे लिए तो मतलब एक ये लेसन रहा है प्रतेश की मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक कॉम्स एंड मीडिया एंड सो ऑन सो फोर्थ. इट्स द होल साइकिल कि जब से आप कंज्यूमर से बात करना शुरू करते हैं, जब तक वो आपके साथ रहेंगे. तो each and every touch point during the whole cycle is your baby. तो I think in a nutshell that's my biggest lesson. और ये थोड़ा सा theory books में से ये थोड़ा divergent way of operating है, लेकिन this is the only way you can do well.
एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग कि टू बी एबल टू, आप जैसे बोल रहे थे थ्योरी बुक से बहुत अलग है, कि यू नीड टू बी टॉकिंग टू ऑल योर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम सी एस एजेंट्स टू probably your users as well, to be able to drive marketing, which makes a lot of sense though. But I want to understand how did you come to this realization कि सबसे बात करनी बहुत जरूरी है. Uh, यार मतलब वो क्या, आई थिंक गॉट इनटू डिजिटल वेरी अर्ली. Mhm. तो उस कारण से देयर वाज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार क्या करते हैं लोग, मतलब कि जैसे आपके जो साबुन तेल कपड़े जूते बेचने वाली जो कंपनीज रहती, मतलब पहले जो थी, आज भी सब हैं ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक दुकान से जो बेचते थे, मतलब वहाँ पे I think those companies didn't have all the data on in real time. मतलब उनको 2 महीना 3 महीने बाद डेटा मिलता था, एंड देन तब तक तो द सारा काम हो चुका होता था. मतलब when I joined like digital at Yahoo in 2008, I saw data is flowing at an every single second. Um, and then if you are like inherently curious, तो आप बोलोगे यार मेरे को डेटा मिल रहा है, तो मैं इसको यूज क्यों नहीं करूं. I think ये जो just nobody like taught this to me or anything like that. लेकिन जब आपको डेटा मिलना शुरू हो जाता है तो आपको लगता है यार if I am seeing this data, if I'm seeing this emergent consumer behavior और मैं कुछ नहीं कर रहा, then I'm not really doing justice to my role. तो ये और कुछ नहीं था, but just like the power of data flowing in all seconds. And then सर कि अगर ये है तो फिर इसके साथ और क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं. जब OLX शुरू करा था, अ, अगर आप देखोगे प्रतेश, जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं इंडिया में या कहीं भी बाहर भी, उनके हमेशा ऑफलाइन कजन्स थे. Mhm. मतलब कि आप आज एयरलाइन का टिकट खरीदते हो, पहले एयर मतलब ट्रैवल एजेंट से होते थे. आज आप पॉलिसी खरीद रहे हो इंश्योरेंस की, पहले आपके LIC एजेंट्स होते थे. तो these companies, they were just the online medium of that particular service that existed. OLX जब स्टार्ट करा था तो उसमें इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी. मतलब पुराना सामान एक दूसरे को बेचना वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज कल्चरली रेलेवेंट. मतलब आप मैक्सिमम अपने कबाड़ी को दे दोगे या फिर Mhm. किसी और को दे दोगे. तो ये चीज एस्टैब्लिश करनी थी इन द कंट्री कि इंडस्ट्री के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू विन द ब्रांड वॉर आल्सो. Mhm. उस वक्त जब समझ आया कि यार मार्केटिंग अलोन वोंट कट इट. Mhm. सो यू हैव टू लाइक लुक एट द एंटायर फनल टू मेक श्योर कि आप जो, और मार्केटिंग इज योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट. आप जो भी इतने मतलब 100 मिलियन 50 मिलियन रेस की आप सुनते हो, 200 500, any B2C company will put a lot of it in marketing. So you as a marketer are responsible for most of the fundraise that's happening. और Biggest अगर biggest आपको लगा expense on the biggest expense on the P&L. investment, Yep, yep, I yep. call it investment. Yeah. Hmm. So मतलब वही था कि if you're putting in a lot of money and it just does half the job, then you as a professional will feel like you won't be very proud of yourself कि यार काम तो पूरा नहीं हुआ, अपना काम हो गया तो क्या हुआ, अपनी KPI हो गया तो क्या हुआ. लेकिन I think those were some of the reasons because of which this whole funnel को देखने का एक जो शुरू से ही दिमाग में जो कीड़ा था वो घुस गया था. And yeah, I think that's why it happened. आपने OLX बताया, जब OLX स्टार्टेड ना, तो आप लोग एक बैटल में थे विद क्विकर, राइट? एंड OLX इवेंचुअली हैपेंड टू विन दैट बैटल, बिकेम द डी फैक्टो विनर इन द क्लासिफाइड स्पेस. क्या एनेक्डोट्स हैं, क्या स्टोरीज हैं, कुछ बता सकते हैं आप? कैसे आप लोगों ने, हाउ डिड यू विन दिस बैटल? या मतलब ये जो क्लासिफाइड स्पेस थी, ये C2C क्लासिफाइड्स थी, है मतलब अभी भी है मतलब इंडस्ट्री तो मतलब, लेकिन और C2C क्लासिफाइड्स थोड़ी ब्रूटल होती है प्रत्यक्ष, मतलब बहुत मोनोपोलिस्टिक होती हैं. ऐसा नहीं कि 4-5 कंपनियां सब 20-15% मार्केट शेयर लेके इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाते हैं. मतलब वन कंपनी, बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क इफेक्ट्स टेक प्लेस करते हैं. So which is why any company that win had to not win by, कि मेरा 30 है तुम्हारा 20 है, मतलब you have to go to 70-80% of the market share. So that itself was like very very interesting because when we started off OLX, I was part of the founding team. My boss Amarjeet Singh Batra, he hired me. Um, he also launched Spotify after his OLX stint, so he's been at it for a very long time. But we were smaller than Quicker थोड़ा सा उस वक्त, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत. They had almost 700-800 people. We were like 30-40 people. तो हमारी
क्विकर की और हमारी प्लेबुक्स बहुत डिफरेंट थी. दे हैड फैबुलस पीपल, वी हैड लाइक गुड पीपल ऑल्सो, लेकिन हमारी प्लेबुक्स बहुत अलग थी. दे इनहेरेंटली बिलीव्ड कि uh, जो मार्केट एग्जिस्टिंग है सी टू सी क्लासिफाइड का उसको डोमिनेट करते हैं. हमारी प्लेबुक थी कि यार मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है, इसको क्रिएट करते हैं. So this was like the biggest shift because of which we used our go-to market was much more broad-based. Theirs was much more narrow casting. So is karan se, I think we were always like we had this huge belief that anybody and everybody will be able to sell. And because of which maybe we use TV a lot. क्योंकि ये 2013 की बात बता रहा हूँ प्रीतेश, आज से 10 साल पहले की. टीवी वाज द लार्जेस्ट मीडियम, अभी भी है लेकिन उस वक्त तो सबसे बड़ा मतलब बाय फार था. तो इट हेल्प्ड अस क्रिएट द इंडस्ट्री, इट हेल्प्ड अस क्रिएट द ब्रांड, एंड इट हेल्प्ड अस विन द वॉर also. I think by the time I left 4 years later, we were 6x of quicker, which meant like 75, 80, 85% market share in C2C classified. तो काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन काफी छोटी टीम से शुरू करा था, छोटी ही टीम रखी थी. आप यू मेंशन टीवी, मतलब हाउ इफेक्टिव इज टीवी एंड टीवी एज अ टूल फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग? डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए टीवी से. जैसा मैं बोल रहा हूँ, OLX 2013 इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमारे को तो इंडस्ट्री क्रिएट करनी थी, एंड दिस वाज द लार्जेस्ट मीडियम. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट मीडियम, मतलब प्रीतेश, दिस इज आल्सो इवन राइट नाउ अगर आप बोलो, मतलब कॉस्ट पर रीच में शायद अभी भी शायद सबसे ज्यादा सस्ता चैनल ये मीडियम यही होता है. तो व्हेन यू आर अ मास इंडस्ट्री विद where you think कि भाई everyone and anyone is my client, टीवी वर्क्स रियली वेल. टीवी में मैं थोड़ा सा इसमें, अब मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन आई थिंक द अटेंशन सेकंड्स is also very high on TV versus like the social media or any other mediums, display and so on and so forth. तो एक तो आपकी cost per reach and reach is very good, and then when you actually expose your ad to a user, the attention that you grab on that particular spot is much higher than any other medium. So reach into attention is what it used to. It still delivers. अब हालांकि थोड़ी reach कम हो गई है. Digital has really scaled up massively. लेकिन और एक और चीज है, ये थोड़ी सी subliminal है, मतलब from a consumer perspective, प्रतेश, मतलब कि देखो आप, there's so many D2C businesses today. Anybody and everybody can be on online, right? That's the beauty of what is happening today. There's a lot of democracy in how anyone can start a business. लेकिन इसका एक अलग नजरिया देखें, you are exposed to so many brands which are very small or very young, that you, when you watch a brand on TV, then you think, yeah, ये brand, this is seriously big. मतलब कि यार, because I'm getting exposed to like 1,000 brands on a daily basis, but most of them are digital because 100 रुपए से भी आप advertising शुरू कर सकते हो. लेकिन when I see something on TV, then you also think, yeah, this is like a big business. This is not a fly-by-night operator. So there are a lot of like subliminal messaging that TV also sends. So depending on what life stage you are in, depending on what you want, TV is very, very effective. I still say that. But you have to use it judiciously. मतलब वो एक ही चीज को आप बार बार नहीं कर सकते. आई मीन व्हेन यू गेट ऑन टीवी, इट्स लाइक ये ब्रांड है, ये कंपनी है, वर्सेस जो आप डेली बेसिस पे डिजिटल पे देखते हो, वो एक स्टार्टअप है, एक जुगाड़ है, राइट? दैट्स हाउ इट्स लाइक दैट. हाँ, मतलब वो सब में मैसेजेस बहुत जाते हैं, मतलब कौन से मीडियम पे होते हैं. मतलब ये एक जो वर्ल्ड में सबसे पहला जो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट था, देयर वाज अ गाय कॉल्ड मार्शल मैकलुहन. आई थिंक 1920s or 1910s, I don't remember the exact whatever decade. He said something very interesting. I think that's very true. That medium is the message. What it means is कि आप जहाँ पे अपना ad दिखा रहे हैं, that itself, apart from showing the ad and how many people you reach, at what cost you reach, that's one thing. Lekin just by being present on that particular medium itself says a lot about how people are consuming you. You on a leaflet which comes in the newspaper gives the consumer ki yaar ye क्या है, मतलब ये कुछ भी कर रहे हैं. लेकिन you on a big hoarding, you on the front page of a newspaper, you on a YouTube masthead, and all these things, they just like tell the person कि यार what is it that I need to think about the company, let alone the product. So medium is also extremely important, not just from what it delivers, but what it makes people feel. So I think Gaurav,
You have now been brilliant in achieving massive marketing and branding success for every company in your stint as CMO in the past, right? आप कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के इनिशिएटिव्स जो आपने रन करे हो जो बहुत इनोवेटिव थे या ग्राउंड ब्रेकिंग थे अपने अप्रोच में? कैन यू रिकॉल एनी सच? I'll try and give you like two, three examples. One from all of my previous stints. मैं पहले ही अपने failure से शुरू करता हूँ. Because I think that failure नहीं होता तो शायद मेरी approach towards media investment नहीं आती जिस तरह आज है. मतलब तो once I joined in Jan 2013 OLX, I think we launched a campaign in February. बहुत अच्छा कर रहा था. Was delivering a lot of good results and all that. On the back of that, I got some extra budgets, almost $1.5 million, which was 7-8 crore rupees in those days. कि इसको एक्सटेंड क्यों नहीं करते, अच्छी कैंपेन चल रही है, सो व्हाई डोंट यू एक्सटेंड दिस. ठीक है, मतलब अप्रैल मतलब ये फेब मार्च में हो गया था, अच्छा कैंपेन चल रहा है, बहुत वी वर ग्रोइंग वेरी वेल. तो मैंने लगा कि अप्रैल आए तो क्या होता है, तो मैंने कि यार आईपीएल, राइट, एंड आईपीएल टुडे भी है, लेकिन उस वक्त भी इट वाज बिकमिंग द सिंगल लार्जेस्ट मीडिया प्रॉपर्टी. मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. मतलब व्हेन आई थिंक वी वर द फर्स्ट डिजिटल प्लेयर टू गो ऑन आईपीएल. तब तक वो वोडाफोन, डीएलएफ, Pepsis of the world, they used to like advertise on IPL. We were the first digital brand to go on IPL. I actually took an associate sponsorship of one of the chota sponsorship for 7-8 crore, uh, and I ran the same ads on that. मेरे को लगा अच्छा ad चल रहे हैं now with this particular media property, और reach मिलेगी तो और अच्छा result आने चाहिए. मेरी जो मीडिया एजेंसी थी, दे गेव मी अ प्री इवैल, उन लगे इतने जीआरपीस डिलीवर होंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ठीक है, मतलब दे लुक्ड इंटरेस्टिंग. द कैंपेन स्टार्टेड एंड यू वोंट बिलीव प्रतेश, रादर देन ग्रोइंग वी स्टार्टेड टू प्लेटू. या और थोड़े दिन में प्लेटू के तो छोड़ो, मतलब वी वर लाइक एक्चुअली डिसेलरेटिंग, वी वर रिग्रेसिंग, राइट. हमारे नंबर्स कम हो रहे थे, बिजनेस नंबर्स की बात कर रहा हूँ. एंड आई लुक्ड एट माय वीकली, जो उस वक्त टैम था, अभी बार्क हो गया है, मतलब मीडिया का टीवी का जो होता है, उसमें देख रहा था मेरे जो जीआरपीस थे, दे वर डिलीवरिंग एट 20% मोर. मतलब तो अगर मेरे को 100 जीआरपी मिल रहे थे तो मेरे को 120 जीआरपीस मिल रहे हैं ऑन अ वीकली बेसिस. सो माय रीच इज in fact going higher than what I expected. My numbers are going down, right? And that's the same thing that continued for the entire 2 months. And I was like, hey, ho kya raha hai? And I just can't understand. Us time pe, I don't know, I'm like, I was looking at each and every data point to make some sense of it. I'm like, the answer came from my customer support head. उसने किया, गौरव, हर रोज 3:30 पौने 4 बजे एंड रात को 7:30 7:45 पे यार लीड्स एक्चुअली स्टार्ट गोइंग डाउन. मतलब हमारे मतलब OLX में वी यूज्ड टू लाइक हैव पीपल पोस्टिंग देयर एड्स, राइट. उनको लीड्स बोलते थे हम लोग, लिस्टिंग या लीड्स जो भी, like every day I'm seeing this thing right now. And anytime there was a big match happening, ki Bombay, Bangalore, then they used to even go further down. So what was happening was, in this 2013, so again I'm like, उस वक्त app wasn't big, mobile internet wasn't as big. वो 15-16 में जियो के आने के बाद से ये सारी चीजें हुई थी. तो then I understood that because of internet not being in the hands of the people and time being finite, मतलब there's a lot of like eyeballs that are going on IPL and people are like watching the ad but not doing anything, क्योंकि आपका laptop, PCs तो होते नहीं है, मतलब वो घर पे ज्यादा लोगों के. So IPL, which was actually delivering the reach, was also killing OLX or users का interaction. And at that time I understood कि यार media को मैं, when I have to invest in media or plan my media, I can't buy it on top of my media क्या बोलते हैं, matrix only. And that's when I thought, yeah, there has to be a better way to understand which media to go after. Then I started investing in econometric modeling, media mix modeling, and so on and so forth. That made me so aware of what happens, कहाँ पे कौन सा मीडिया चलाना है, कितना चलाना है, कब चलाना है. Everything became absolutely clear. दिल्ली में होर्डिंग काम नहीं करते, बैंगलोर में बहुत सही काम करते हैं. इस पर्टिकुलर जॉनर पे इस टाइम पे चलाएंगे तो इतना मेरे को आउटपुट मिलेगा. इट ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ मैथ्स, इवन लाइक द ऑफलाइन टीवी इन्वेस्टमेंट्स. सो वो अगर फेलियर नहीं होता ना प्रत्यक्ष, तो शायद मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग और माई क्यूरियोसिटी अबाउट लाइक रियली लेवरेजिंग द लार्जेस्ट कॉस्ट ऑन अ मार्केटर्स P&L, विच इज मीडिया, वो मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर पाता. तो I think that one big failure like really set me up for huge success over the next 10-11 years.
So I think I'm starting with a failure, but it led to great learning for I'll come to some of the more successful campaigns that you have run. बट मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ, आपने बताया इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, मीडिया मिक्स मॉडलिंग, मॉडल्स दैट जो आपने स्टार्ट करे, what can you go deeper into it, थोड़ा बताएंगे? देखो प्रत्येश, मतलब क्या होता है ना कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनी स्केल कंपनी इज रनिंग एड्स अक्रॉस लाइक 20, 30, 40 मीडियम्स। और मतलब कि अगर आप डिजिटल फेसबुक पे चला रहे हो, मे बी वहाँ पे भी 30, 40 कैंपेन चल रही होती हैं। गूगल पे आपकी 100, 150 कैंपेन चल रही होती है। मतलब जस्ट द अमाउंट ऑफ कैंपेन्स दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अ बिग कंपनी इज रनिंग इज इनसेन। और ठीक है, डिजिटल में थोड़ा लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन से आपको थोड़ा समझ आ जाता है, लेकिन आप ऑफलाइन में जो कर रहे हो उसका क्या मतलब समझ आएगा। लेकिन जो अगर आप यूजर के हिसाब से देखोगे, यू जस्ट डोंट लाइक लुक एट एन एड एंड यू जस्ट कन्वर्ट। आप टीवी पे देखोगे, रेडियो पे सुनोगे, कोई डिस्प्ले ऐड देखोगे फेसबुक पे, आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पे आपको एक ब्लू लिंक मिलेगा, राइट, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, आप उस पर क्लिक करोगे तो लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन बोलेगा गूगल ने कन्वर्ट करा है। लेकिन दैट पर्सन केम थ्रू 5 और 6 डिफरेंट टच पॉइंट्स, राइट। कोविड हो गया है तो फिर मतलब कि मेरे को गाड़ी चाहिए, दैट्स अ मैक्रो इम्पैक्ट ऑल टुगेदर, राइट। मेरे को यूज गाड़ी दिला दो, मतलब मेरे को तो अपनी खुद की गाड़ी चाहिए, अब नहीं चाहिए मेरे को मतलब वो शेयर्ड कैब्स या मेट्रो एंड ऑल। सो इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग या मीडिया मिक्स मॉडलिंग से क्या करते हैं ना प्रत्येश, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज मीडियम्स। आपका आउटपुट क्या है, जैसे मान लो लिस्टिंग हो गई OLX की, ये मेरा एन मेट्रिक है, और मेरे, सो दिस इज योर वन मेट्रिक, एंड ऑन द अदर साइड यू हैव लाइक ऑलमोस्ट 300, 400 different campaigns running at all times. They're all leading into this particular metric, right? तो ये इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग या मीडिया मिक्स मॉडलिंग विल टेल मी कि भाई अगर ये जो एक लीड जो कन्वर्ट होती है उसमें 20% टीवी का रहेगा, उसमें 5% रेडियो का रहेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। टीवी में कौन सा जॉनर, कौन सा एड स्पॉट एंड ऑल दैट, तो मतलब इट बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट कि आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि यार दिस एड डिलीवर्ड मी सो मच, नॉट थ्रू लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन बट फ्रॉम what, from multi-touch attribution perspective। तो ना, मतलब फिर how do you do that calculation? आप ये attribution करते कैसे हैं? मतलब they are like data scientists, they are like stats majors who actually make these models, like random forest algorithms run करेंगे, they'll do regression analysis, they will take a lot of my input data, they will take a lot of my business data and then they'll run models। तो पहला स्टेप होएगा, अब मैं से ज़्यादा geeky हो रहा हूँ लेकिन मतलब कि आपके जो data sets हैं, are they actually even like fitting the model? Are you R squares like upwards of 0.9, 0.95? मतलब इसका मतलब कि जो डेटा है मतलब वो सही स्टोरी बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। वहां से शुरू होता है, देन दे रन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स एंड देन यू ऑलमोस्ट लाइक जूस आउट कि भाई इस सिटी में मेरे अगर मतलब 100 लीड्स आई हैं तो कहाँ से आई हैं। और मतलब ये एवरी सिंगल, मतलब ये मैं हर क्वार्टर करता था, लेकिन एवरी सिंगल रन वुड गिव मी ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1,000 insights। कि ये जैसे अगर आपने कपिल शर्मा शो पे 8:30 बजे चलाया 15 सेकंड वाला एक ऐड, और अगर आपने NDTV या फिर टाइम्स नाउ पे ये ऐड चलाया, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एट व्हाट पॉइंट डू यू स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स एट अ पर्टिकुलर जॉनर, क्योंकि अब वहां पे अब वो प्लाटू कर रहा है उसका ROI। और अब मतलब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि आई अंडरस्टूड each and every I started to understand the impact of each and every dollar I was spending, not because of last click attribution, but from a regression and multi-touch attribution perspective। तो जो मैं बोल रहा था, मतलब आई अंडरस्टूड, मैं बड़ी क्विक सी चीज बताता हूँ कि भाई जैसे आउटडोर्स इन दिल्ली जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर अस, जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर अस, बट आउटडोर्स इन बॉम्बे एंड बैंगलोर यूज्ड टू वर्क ब्यूटिफुली। तो मैं आउट मतलब नाउ नाउ इमेजिन द पावर ऑफ दिस प्रदेश। जब मैं मीडिया प्लान बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को टॉप 10 सिटीज में आउटडोर लगा दो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दिल्ली में 1 रुपया नहीं लगाना है, लेकिन मैं बॉम्बे बैंगलोर में छाप दूंगा, राइट। क्रिकेट एज अ जॉनर इज नॉट वर्किंग फॉर मी, सो आई एम गोना स्टे अवे। लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, आई थिंक 2015 में जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप, वो 20-22 करोड़ की रही होगी, आई थिंक सो। वी इन्वेस्टेड जीरो। No. So you know where the money works and then you invest accordingly। और यही मैं बता रहा था ना प्रत्येश, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि ये जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी कहाँ से आई, ये मतलब ये अ, शायद पुराना प्लेबुक बोलता कि अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो तुम भी करो।
लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग नाउ आई वाज लाइक ये मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है. I'm supremely confident कि I will like save my 5 crore rupees in a year by not advertising on outdoor in Delhi, and I'll use that to just swarm bomb Bangalore. Hmm. So that's the power of it. Understood. Understood. So, is it fair to assume कि मतलब आप बताना, because a lot of people say कि failures lead to successes. तो क्या fair होगा क्या assume करना कि you have had more successful campaigns or than failed campaigns? Because मतलब you have been massively successful in scaling up a lot of these companies. तो मैं एक assumption के साथ चल रहा हूँ कि आपके successful campaigns ज़्यादा रहे हैं compared to failed campaigns. Pritesh, the way I look at it is कि मतलब मैंने पहले ही एग्जांपल आपको मेरा फेलियर का दिया था. मतलब उसने इतनी अच्छी थप्पड़ मारी कि मतलब मेरे को हर चीज उसके बाद से लगा था कि यार हर चीज का एक प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है. So I'm a big believer in processes, Pritesh. And because I've done sales at Yahoo, I'm a big believer in projection also. प्रोजेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पोस्ट फैक्टो यू कैन गो टू द बोर्ड एंड से कि भाई मैंने जो 10% का जो मैं ग्रोथ लेकर आया हूँ, दैट्स रियली गुड. मे बी द ग्रोथ शुड हैव बीन 13% or 14%. So my whole process was made to make sure that I was projecting really really strongly कि अगर मैं $1 million की अगर मैं कैंपेन चलाऊंगा, the because of my analysis, because of my media mix modeling, because of a lot of other uh, analytics that I used to run on my marketing and my consumer experiences, I used to make sure that I take a lot of pride in my projections कि अगर मैं ये पैसा इस तरह से लगाऊंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रेंज में मेरे को रिजल्ट मिल सकता है. And before any campaign I used to do, I used to project to all the stakeholders, from my customer support head to my to my tech heads to my product heads to my board to the CEO, everyone. क्योंकि imagine करो प्रत्येश कि you think that this campaign will deliver a lot of success, yeah, but if your tech hasn't got the required server space, or your customer support doesn't have enough people to take the calls of the customers and so on and so forth, is that campaign a success or not? So just by projecting well, you were able to get the entire company on the same page. So हो सकता है बाकी लोगों ने भी ये सारी चीजें करी होंगी जो मैंने करी थी, लेकिन just because I was looking at the company rather than just marketing, eventual result जो आता था वो ज्यादा अच्छा आता था. Just because everyone in the company was geared up for that kind of projection. तो हो सकता है lot of people would have delivered a lot of marketing top end of the funnel success, लेकिन वो नीचे जाके आपका टेक्नोलॉजी, you haven't bought enough server space, आपने कस्टमर सपोर्ट के लोगों को नहीं बिठाया है, योर प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवरिंग द राइट प्रॉमिस जो आपने मार्केटिंग में बोली है, तो वो आदमी यहाँ पे आके ही मतलब वो यूजर यहाँ पे रुक जाता था, तो डाउन स्ट्रीम उसकी गुडनेस नहीं आती थी. तो आपका मार्केटिंग तो ठीक है, हाँ मतलब मैं तो टॉप एंड ऑफ द फनल 20% इंक्रीज कर दिया, लेकिन नीचे शायद 4% इंक्रीज होता था. तो अगर मैं 20% ऊपर इंक्रीज करता था तो नीचे भी उतना ही आता था. तो इस कारण से सो आई थिंक इट वाज मोर अबाउट प्रोसेस rather than any flash of genius. It was just like a hard working process. That's it. So, in your last four stints, what are some of the craziest moments that you have had as a CMO now? यार 2019 में फरवरी में we were doing the first campaign for CarDekho. Now I'm talking about CarDekho now. और CarDekho का पिछला ब्रांड कैंपेन 5 साल पहले हुआ था 2014 में, राइट. सो आई थिंक दैट कैंपेन डिडंट डिलीवर एज पर एक्सपेक्टेशन, तो उस कारण से मतलब CarDekho had he Shied away. shied away, let me put it this way. So this was almost 2 years after I had joined. We were doing the first brand campaign, and Pritesh मतलब वो 2019 फरवरी में हमारे को लॉन्च करना था, एंड उसमें गवर्नमेंट हैड पुट लाइक दिस एनटीओ रेगुलेशंस, और वहाँ पे टैम का जो डेटा था वो बंद हो गया था, राइट. सो ऑलमोस्ट फॉर पास्ट 3-4 months there was no media data, and because I had not run any campaigns on car देखो, my MMX and econometric models weren't there, right, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था. तो ऑलमोस्ट यू आर लाइक गोना बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट यू कि भाई 5 साल बाद कैंपेन होने वाला है, अच्छा करना चाहिए, पिछली बार तो नहीं चला था, एंड यू हैव नथिंग टू प्लान ऑन, राइट. And what kind of money are we talking about? वो तो रहने दो यार, मतलब वो तो एक ठीक कॉन्फिडेंशियल, लेकिन ठीक इट वाज फेयरली वेरी साइजेबल.
I'm like we're coming back after 5 years, so and it is very sizable. Um, so we made through technology we understood what are our people watching and so on and so forth. So we like took a lot of data and we made like a rudimentary media plan, not a rudimentary media plan, but we made an ad hoc media plan basis a lot of signals that we could like collate from digital, not just from our side but then everywhere else also. तो उस कारण से हमने एक मीडिया प्लान बनाया मतलब कि चलो उसको चलाते हैं. अब वो चलना शुरू हुआ एंड 4-5 दिन हुए तो कैंपेन को, वी स्टार्टेड सीइंग सम गुड सक्सेस फॉर द कैंपेन. और ये जो कैंपेन का क्रिएटिव था ये बड़ा वो था, सेलिब्रेटरी था. एक शादी का सीन है ये है, या फिर एक मूवी स्टार की मूवी लॉन्च का सीन है, तो मतलब बड़े सेलिब्रेटरी एंड वेरी ओवर द टॉप काइंड ऑफ एड्स थे ये. um, within 4 or 5 days, Balakot happened. So India went and bombed across the border. Um, and all of a sudden, now just imagine like what you as a marketer have to do. When Indian Air Force goes across the border and bombs, and not just in POK, IAF went into Pakistan and bombed, right? Yes. So, matlab ki, you would think that war is not too far away, राइट. और पूरे दिन न्यूज चैनल पे चल रहा है, वॉर है, ये है, वो है, होने वाला है. एंड आई जस्ट लॉन्च माय फर्स्ट कैंपेन इन 4 days और वहाँ पे सब शादी में उछल रहे हैं और वो मूवी का मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि पीपल आर लाइक जस्ट शिट स्कैर्ड राइट नाउ कि नाउ देयर इज अ वॉर कमिंग. सो आई हैड टू स्टॉप द कैंपेन इन 4 days. मतलब सो आई टुक दैट कॉल कि आई एम नॉट गोना रन दिस कैंपेन. पर ठीक है, मतलब वो डी एस्केलेशन हुआ. तो नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग अ कैंपेन आफ्टर 7-8 days. तो मतलब ये टीवी कैंपेन में इस तरह चला रहा था जैसे कोई डिजिटल कैंपेन चला रहे होते हैं, अभी रोक दो अभी चला दो, अच्छा ये कर दो ये कर दो वो कर दो. तो लेकिन दैट कैंपेन डिलीवर्ड 40% सक्सेस ऑन मैट्रिक्स. इट इज अ ह्यूज सक्सेस. बट द वे वी मेड दिस कैंपेन, मतलब मैं तो उसके बाद ये बोलता था यार हर कैंपेन के पहले मेरे को यज्ञ हवन करना पड़ेगा, नारियल फोड़ने पड़ेंगे. मतलब कि इट्स जस्ट इनसेन कि मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि मतलब होता है प्रोडक्ट फट गया, मार्केटिंग मटेरियल नहीं गया, ये आप कंट्रोल फिर भी कर सकते हो. अब इंडियन एयरफोर्स गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर एंड बॉम्बिंग, आपके पास मीडिया डेटा नहीं है 4 महीने का, मतलब यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स. सो यू हैव टू लाइक ऑलमोस्ट थिंक ऑन द फ्लाई and take very very quick decisions. And look at this, Pritesh, because nobody is trained you for these kind of decision making. This just, you just have to like look at whatever data points you can gather and make the best case out of it. तो ये मतलब मेरे को, मैंने बहुत सारा कैंपेन्स करी हैं, काम करा है, ग्रोथ आई है कंपनीज में, लेकिन दिस कैंपेन ऑलवेज मेक्स मी लाफ कि नाले क्या कर रहा था, मतलब कि मतलब इतनी, और सारी कंपनी आपको देख रही है कि यार 5 साल बाद कैंपेन हो रहा है, अभी फंड रेज करा है $100 million का, अब तो बस है ना, लाइक यार कांट फेल, you know, can't fail. तो quite a lot of fun during this campaign. अब fun लगता है, उस वक्त तो उन्होंने क्या हो रहा था. How a bombing can change a digital company's narrative is crazy, right? Yeah. But now I want to talk about today. आप ना इसके पहले you have been working in all the digital companies before that, right? OLX में काम करा आपने, CarDekho में, and फिर Zupee में, and Yahoo, you started with Yahoo also. And now you move to Noise, right? अब Noise तो लीडर है इंडस वेरेबल एंड ऑडियो मार्केट वाली कैटेगरी में, बट इसके पहले यू हैड नो एक्सपीरियंस इन फिजिकल डिवाइसेस कैटेगरी. सो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड व्हाट्स न्यू, क्या नया है, क्या सेम है? तो प्रतेश, मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप एक B2C कंपनी हो तो 80% ऑफ थिंग्स आर सेम. यूजर्स जिस तरह से खरीदते हैं वो मुझे समझ आ चुका है, जो मार्केटिंग मीडियम से वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो मुझे समझ आ चुका है. और अगर आप देखोगे याहू से OLX, मतलब याहू वाज लाइक अ published, मतलब Yahoo was Yahoo, right? The largest consumer internet tech company of the world at that time. वहाँ से मैं क्लासिफाइड से में गया, क्लासिफाइड से मैं ऑटोटेक में गया, ऑटोटेक से मैं रियल मनी गेमिंग में गया. तो फॉर मी इंडस्ट्री इज, एज लॉन्ग इट्स B2C, आई हैव ऑल द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू गुड फॉर द कंपनी. थोड़ा टाइम लगता है, जैसा अभी मेरे को 2 महीने हुए हैं नॉइज में. नाउ यू आर राइट कि मतलब पहली बार मैं प्रोडक्ट कंपनी में गया हूँ, so supply chain, logistics, manufacturing, retail, all these things are things that I'm learning right now.
and because of which I have to change the way my expectations from myself or my team or the way I want to go to market has changed. But it's not a huge blocker. In fact, I think, this is my opinion. I'm people will disagree with it, and I think they'll also be right because I'm gonna be partially right in what I'm gonna say. जो learnings आपको क्रॉस कैटेगरी आती हैं, that's what keeps your mind fresh and your go to market fresh. जो चीज़ मैंने लिक्विडिटी या नेटवर्क इफेक्ट्स का जो मैं ओ एल एक्स में सीखा था वो मेरे को जूपी में बहुत काम आया था रियल मनी गेमिंग में, right? So there will always be things that your incumbent category won't teach you, but some other category will teach you. And this is my fifth category to speak of. तो मतलब मैं कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ तो कहीं से निकल ही जाता है. अगर आप एक ही कैटेगरी में बहुत टाइम से रहो, then it becomes very easy for you to operate. And that also leads to a lot of, हाँ ये करना है, ये कर दो, पांच चीजें कर दो, हो जाएगा काम. मतलब we'll be doing like an above average job if you execute well. But that's not fun. So I think it just keeps you on toes. So Noise is a fabulous company. The fact that Indian manufacturers have done so well, Indian companies have done so well in this category is a very good thing for the country also. Um, and Noise has done phenomenal. अगर आप देखोगे Noise का तीन चार टैग्स हैं जो एक कंपनी के अलावा मेरे को और कहीं याद नहीं आ सकते. मतलब कि बूटस्ट्रैप, प्रॉफिटेबल, मार्केट लीडर, हाई ग्रोथ कैटेगरी, राइट? ये चारों चीजें, इनमें से कोई दो चीजें आप कोई कंपनी पे लगा सकते हो एंड दैट विल बी राइट. चारों चीजें नहीं लगा पाओगे. आई थिंक जीरोधा विल बी द ओनली कंपनी दैट आई कैन थिंक ऑफ ऑन विच ऑल दीज. बी टू सी की बात कर रहा हूँ प्रत्यक्ष. बी टू बी में शायद होंगी जो और कर. बी टू सी में शायद ये तीन चार टैग्स जीरोधा के अलावा मेरे को तो और कुछ याद नहीं आता जो हर जगह. एंड नॉइज इज दैट कंपनी व्हिच हैज दैट दिस टैग. And how do you think Noise is doing it? Because अगर आप देखोगे physical devices वाली category ना, I assume कि it's a very high investment category जहाँ पे ROI also comes later, right? So how do you think Noise is able to do it? No, it's actually थोड़ा सा इसमें फास्ट मूविंग, जैसे सीपीजी गुड्स होते हैं या फिर एफएमसीजी है, तो थोड़ा सा एलिमेंट उसका है इस कैटेगरी में. ये टीवी फ्रिज की तरह नहीं है कि आप 10 साल बाद चेंज करते हैं, मतलब आप शायद हर 12 से 18 महीने में चेंज करते हैं. इट्स एक्चुअली फैशन टेक, लाइफस्टाइल टेक बोल सकते हैं इसको. तो आई थिंक people do upgrade very rapidly, and the price points are very very competitive. मतलब आप 1500 1200 रुपए में भी, 1400 रुपए में भी अच्छी घड़ी आप खरीद सकते हैं जिसपे everything works and goes up higher. So I think it's a category which is very agile, and because of which this category has grown so fast. And Abhi, I think from whatever I've started to understand about the category, I think the biggest growth is still to come. क्योंकि जो innovations ये category में अभी होने हैं बाकी on a mass level, they're very exciting. So I think once they'll come, then more people will upsell and more people will buy their first watches. I think you discussed about you talked about the upcoming trends, uh, and also because that's specifically more significant because अब जो ये voice led LLM models and all of that has come up. तो I want to understand कि आप क्या trends देखते हो in marketing with such proliferation of automation, data, AI सब जगह आ गया है. यार I think that whole generative AI आजकल ये जो एक buzzword है, this is gonna be quite powerful in a certain part of marketing. जो आपका काफी एक होता है ना, जो एक बिजनेस एज यूजुअल पार्ट जो मार्केटिंग का होता है. मैं मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा प्रत्यक्ष, मतलब जो पूरा ग्रोथ का होता है. मतलब कस्टमर सपोर्ट की भी अगर मैं बात करूं तो मतलब यहाँ पे जनरेटिव एआई बहुत खेलेगा. मार्केटिंग एसेट्स बनाने में जनरेटिव एआई बहुत खेलेगा. So I think some part of marketing, which is usually very predictable, very business as usual kind of marketing and growth strategies, वहाँ पे you will see a lot of play of generative AI and these kind of things. I think, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, मतलब कि अभी जैसे मैंने बताया कि यार बालाकोट प्लेन जा रहा है, that has an impact on my campaign. There are no data points for this. As I said, nobody teaches you for these. So if a data model doesn't have this input data, then it can't be. So I think the power of a marketer, of a growth marketer, is still gonna be
extremely relevant, uh, क्योंकि यहाँ पे इतने divergent data points होंगे which are unstructured also, कि आप वो कभी भी एक मॉडल में नहीं डाल सकते. बट आई थिंक आई मीन लाइक जो बिजनेस एज यूजुअल वाली जो चीजें होती हैं जहाँ पे डेटा पॉइंट्स बहुत रोबस्ट होते हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, वहाँ पे आई थिंक दीज थिंग्स विल टेक ओवर फॉर श्योर. आई रियली थिंक सो. The other thing will be that whole uh, the omni channel approach, कि आप किस तरह से, how are you planning for your customer experience across each and every medium, not just from marketing perspective but from like a user experience perspective. This is not about technology per se, but this is just about looking at each and every touch point differently. कि अगर मैंने आपसे last time ऐप पे chatbot से बात करी and today if I'm messaging you, how can I stitch those journeys together? I think that's where the real growth is going to happen for a company. Uh, Pritesh, काफी सारी companies are now coming to that stage where they have to go public because the investor के जो funds हैं मतलब उनकी life cycles are getting close to where they also want their liquidity and so on and so forth. Public तभी जा सकते हैं when you are running a profitable business. Profitable business में I as a marketer will be the first one to put my hand up कि marketing is one of the single largest costs on the P&L. So till the time you don't like optimize your cost through growth strategies, you cannot go. You can't be profitable. And if you aren't profitable, you're not gonna go public, which will make a lot of people very unhappy. Uh, so those are two things that I think I wanted to share with you. So I think I totally agree. Generative AI and जो chat GPT and जो LLM models हैं, they will definitely change the way we work. I don't feel that they will replace all the jobs, they will replace all the people, but they will definitely change the way we work. Not just in growth and marketing across the board, Yeah, be it in tech, be it in data science itself. Data science key models and they have started impacting data science. Uh, absolutely. yep, yep. But are there any like I want to talk about your career a bit because you have had like 20-25 years of career now. You have tons of achievements in the last many years, right? कोई particular achievement या कोई particular milestone है आपकी life में that you are especially proud of? Yeah, thankfully, मतलब कि whichever company I've been a part of, I've been lucky enough to play a big part in that company's success. क्योंकि अगर वो एक ही जगह होता, दो ही जगह नहीं होता, तो शायद that would have become like my proud moment. लेकिन mercifully, OLX is the largest classified company in the country. CarDekho is the largest auto tech company in the country. Zupee is the largest casual and board games real money gaming player in the country. But they did not start from there, but they reached there with marketing and growth teams playing a big role. So मतलब अगर एक ही जगह होता तो शायद मैं उसका बोलता, लेकिन तीनों जगह हुए तो then it's not like one thing stands out. मेरे लिए मे बी प्रत्येश सबसे important चीज what I take pride in is that people who were in my teams, be it at OLX or CarDekho are heading marketing units today. Um, and very very good companies, and they are like HODs or marketing heads and so on and so forth. तो मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है देख के कि you grew together. Uh, and I've got almost like 6-7 colleagues of mine who are heading marketing units themselves right now, doing fantastically well. So I think that's really good to see. Um, yeah. I think Gaurav, that's a crazy win, I will say. But having said that, मैं एक बार समझना चाह रहा हूँ कि आपके क्या leap of faith moments थे? What were the risky decisions that you took जो define किया आपके career को, right? या मैं हमेशा मतलब प्रदेश मतलब मे बी आई टॉक अबाउट वन और टू कैंपेन्स, लेकिन मैंने एज अ फिलोसफी आई ऑलवेज लीव व्हेन आई थिंक आई हैव डन माय जॉब. जैसे इसमें एक, हालांकि बोथ आर लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट देन द वे दे लेफ्ट वाज वेरी डिफरेंट. लाइक जब कपिल देव रिटायर हो रहे थे, एवरीबॉडी इज आस्किंग व्हेन आर यू गोना रिटायर, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज पास्ट हिज प्राइम. When Sunil Gavaskar retired, everybody's like, "Why are you retiring? I mean, he's still got so much more to give." Um, so I've always maintained that I'll go out when I'm like Sunil Gavaskar. Not, I'm like that's my
philosophy. When things become autopilot, when my learning stops, when the company is at a good place, then I leave. That's been my. If you look at my journey, um, I think that's when I've always left. So because of that, I always keep my own interest for my new job or just job in particular fresh. मेरे को एक क्या लगता है ना, यू कैन नॉट इनोवेट व्हेन यू आर गोइंग डाउन, तब आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में होते हो. एक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रप्शन होता है, क्या, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन. मतलब हम जैसे एक बेल कर्व होता है, राइट, इस तरह जाता है एंड इस तरह से आता है, राइट. थ्योरी ऑफ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में ये होता है कि व्हेन यू आर ऑन द अप एंड यू स्टिल हैव अ लिटिल बिट मोर टू गो, rather than enjoy that and then like कि हाँ यहाँ पे भी सही चलेगा, chart a new growth path. So I've always done that. कि I've always like कि हाँ, I think now company's in good shape, team has totally taken over, my job is done, my learning is stopped, let's go. So I think that's kept me relevant, I would say. Otherwise it's very hard. I mean, like, Pritesh, digital and new age companies, it's a very brutal workplace. I'm using this term. And I'm like the reasons every day we hear, and you must be, I mean, like, you would be in a digital, I mean, you would know thousands of people in digital company. It's a very brutal workspace because of the kind of growth that's expected, the amount of money that has been invested, the amount of work that has to be done. It's very, again, I'm like, it's more about the process one, but then I've been lucky because I've been relevant for a fairly long time. And that's just because A, the process worked, and B, I understood कि everybody has a selling date, right? I'm very, very humble enough to realize that कि कोई भी कितने बड़ा तीस मार का हो, at some point I'm like, you will outlive your usefulness, and somebody else has to take over. So I think I've always done that. That's just the philosophy that I have. um, और मैं एक कैंपेन के बारे में बात करूंगा because this just like, for me, these, again, OLX, very early days. This was 2013 October या November की बात होगी. We were doing very well. 9 10 महीने हो गए थे. Company was doing very well. अच्छी growth आ रही थी. And I remember कि my boss Amar, he asked me कि गौरव, इस साल तो सब सही हो गया. Next year क्या करना है? And how do we grow faster? यार, चलो आपको कल बताता हूँ. So I'm like, I was in a mall when he called me at 8 o'clock in the night. मैंने कि कल बात करेंगे यार. मैंने कि ठीक है. So I just like, but that, as simple as it may sound, it's a very complex problem to solve. But that day I went back home and I just started looking at data and I saw something very interesting. हमने प्रत्यक्ष की जो दिल्ली market था for OLX, that was like about 2x of Bombay Bangalore, जबकि Bombay Bangalore में भी internet audience दिल्ली जितनी है, if not more, और 3x of Chennai, Kolkata, Hyderabad markets. और मेरा जो गो टू मार्केट था, मतलब वो सिमिलर था कि टीवी वहां पे जा रहा था, यहाँ पे भी जा रहा है. एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि व्हाट्स वर्किंग इन दिल्ली इज नॉट वर्किंग इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड हालांकि मतलब पैदाइशी, मतलब इंडिया में ही है, मतलब शुरुआत से पूरी दुनिया, मतलब पूरा देश घूमा है, तो वो मालूम भी है कि वही आज इज अ वेरी हेट्रोजीनियस कंट्री. बट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार, people are not responding the same way as like a North Indian audience is responding to the ads that we are making. At that time, overnight, I just realized that I have to torpedo my biggest marketing medium, which is TV, and rather than going national और फिर डब करके कन्नड़ में चला दो, डब करके तमिल में चला दो, डब करके तेलुगु मार्केट में चला दो, we'll have to create like not just one campaign but maybe 6 different campaigns and treat each region for the culture, for the local, um, uh, for the local insights and so on and so forth. So all of a sudden, by the time March, April of 2014 came, I had 6 different campaigns happening in the same campaign. So while Kapil Sharma was for Hindi Heartland, very over the top, Dhanush was doing for Tamil Nadu. Um, Allu Arjun for the Telugu speaking audience. You had Sudeep for Karnataka. You had like, so all of a sudden I was like, ek
कैंपेन में मैं 6 कैंपेन चला रहा हूँ, बट माई एंटायर थिंग वॉज माई बिगेस्ट कॉस्ट इज मीडिया. My production and operational cost is this, my media cost is this. But by just putting, like, say, 1x of more production and effort, if this thing gets optimized, then I gain more. So Hmm. at that time, we started doing, and we saw like the entire South Indian market really, really growing much faster than Delhi ever used to grow. Because now you are almost like, ki now the audience say, hey, now I relate to this particular brand. Now I understand why this is for me. Because now the local insights and local cultural nuances are being taken care of. तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक एज सिंपल स्टेटमेंट फ्रॉम अमर कि यार नेक्स्ट ईयर क्या करना है, क्योंकि नाउ एवरीबडी एल्स वाज आल्सो गेटिंग इनटू टीवी क्विकर, ई कॉमर्स प्लेयर्स, एवरीबडी वाज कमिंग ऑन टीवी. तो ऐसा नहीं था कि जो टीवी जो मैंने 2013 में व्हिच आई enjoyed like pretty much like an open field, everybody was muscling in because they understood कि OLX कुछ तो कर रहा है. We were the first internet player to sustainably invest on TV, and others were Hmm. learning from us. Like यार तो next year तो नहीं रहेगा competitive advantage. So I disrupted my biggest competitive advantage and went super local, hyper local in 2014, and we grew like mushrooms because of that across the country. So I think that reminds me of Amazon. Actually, if you so Amazon started with selling books. I'm not sure if you're aware of that. The बहुत classic story is started with selling books. They got successful there. And फिर Amazon ने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि एक टीम बनाते हैं internally that will kill us. Hmm. That will kill us. So they decided to build a team to kill Amazon. क्योंकि somebody else will. अगर आप नहीं किल करोगे तो कोई और आएगा, कोई और Or someone the- will disrupt it and replace you. yeah. And that is what led to finally the invention of and discovery of जो भी है, they built the product called Kindle, and ये audiobooks and ebooks का पूरा category उन्होंने फिर build करा उसके बाद. That is how Kindle was born, and that's a crazy story. You want to typically always, like what you said, you want to typically disrupt what you're doing, see how you can change things. Otherwise, जैसे आप बता रहे थे कि someone else will, quicker will do that, right? Then they will Because change they're the good way. people everywhere, Madhya Pradesh. हर जगह ना अच्छे लोग हैं, सबके पास खूब अक्ल है, खूब पैसा है. But थोड़ा सा वो I think it's a great example that you gave. मतलब कि खुद ही अपने आप को थोड़ा सा critically देखोगे तो फिर कोई और नहीं देख पाएगा. Awesome, awesome. So I want to understand your, because we discussed a lot around approaching target audience. तो मैं समझ रहा हूँ, how do you approach understanding your target audience किसी भी product के लिए, किसी भी service के लिए, because आपने multiple products and services पे काम किया, right? What methods do you use to effectively reach and engage with them? या देखो जो आपका जो पूरा मार्केटिंग इकोसिस्टम है या मार्केटिंग स्टैक है, वो आपको एक लीनियर तरीके से आपके कंज्यूमर के बारे में बताएगा कि भाई अभी Hmm. जैसे मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो एक सर्टेन जना खरीदेगा. लेकिन I'll give you an example. जब कोई गाड़ी खरीदता है, राइट, द कलर इज यूजुअली डिसाइडेड बाय द चिल्ड्रन एंड द, मतलब सपोज टिपिकली ये होता है कि मतलब कि मैन ऑफ द हाउस इज बाइंग द कार, मतलब कि ये ज्यादा मतलब प्रपोर्शन में देखा जाता है, राइट. मतलब अगर मैं किसी डेटा से देखूं तो, लेकिन जो कलर और जो कलर होता है, दैट द लेडी ऑफ द हाउस एंड द किड्स ऑफ द हाउस डिटरमाइन, राइट. सनरूफ होनी चाहिए is something that kids of the house will determine, right? So now you're like seeing कि यार मेरा तो जो target audience है, buyer is maybe the male, but influencers and consumers are totally different. Hmm. And once you actually start thinking like that, then your entire go-to-market strategy just changes. I'll give you an example again. Um, OLX में again, मतलब ये जो मैं अभी गाड़ी का दे रहा था, कार देखो से दे रहा था, Hmm. लेकिन OLX में मतलब कि a lot of listings were done by men, Hmm. right? क्योंकि कि भाई they are the ones who will put up the listing, their phone numbers, and they'll talk to the person who wants to buy it. मतलब ये रहता था. लेकिन जैसे फ्रिज, टीवी, जो हाउस होल्ड गुड्स थे, all the decision used to be made by women of the house. कि मेरे को टीवी हटाना है, फ्रिज बेचना है, मतलब फ्रिज नया लाना है, and so on and so forth. So they were the instigators of that transaction, right? So once it dawns upon you, then your marketing initiatives become so much more clear. जैसे
वेरी सिली एग्जांपल, लेकिन माइटी राजू करके एक कैरेक्टर है छोटा भीम यूनिवर्स का। हम्म, हम्म, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट, लेकिन मतलब फॉर हम्म। पीपल जो छोटे यप, बच्चे यप। हैं, तो उसकी एक मूवी आई थी। तो हमने OLX ने उसमें इंटीग्रेशन करा था, क्योंकि वी न्यू कि आई मीन लाइक किड्स विल गो एंड वॉच, हमने विद देयर मदर्स एंड दे विल कीप ऑन वाचिंग दीस थिंग्स विद देयर मदर्स। सो अगर मैं देखूं मेरा बायर तो जो मेल ऑडियंस है, I'm not optimizing that, but because of the children watching, and usually the mother also watches the same thing with them, I was actually talking to them by having an integration in an animation Mighty Raju film, right? So target audience is not just the person who buys, but who influences, who consumes, and so on and so forth. So you will sometimes not just dominate on the buyer cohort, but you will also use techniques that energizes or activates your influencers and consumers. So yeah. So pretty interesting point. I think it makes me rethink a lot of stuff that we are doing here today, and it makes me rethink a lot of our own understanding of our TG. But yeah, I think I want to probably go back last few decades, or because you have spent बहुत सारा टाइम यू हैव स्पेंट 20-25 years. मैं समझना चाह रहा हूँ कि लास्ट 2 decades में अगर आप देखोगे तो थिंग्स हैव चेंज रैपिडली. You must have transitioned over multiple tools, technologies in your branding, marketing campaigns, and all of that. Do you think current world में are the most effective ways of reaching and connecting with customers? We have talked about, I know we have talked about TV, I know we have talked about media, but current world में सबसे effective तरीके क्या हैं? ये डिपेंड करता है कौन से लाइफ स्टेज पे हो प्रत्यक्ष, मतलब फॉर अ D2C यंग बूटस्ट्रैप ब्रांड डिजिटल, मोर लोअर एंड ऑफ द फनल मार्केटिंग, जैसे आपका सर्च होता है, आपके ये सारी चीजें जो आपको बहुत क्विक ROI देता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट? सो डिपेंड्स ऑन आपके जेब में कितना पैसा है, कितना रनवे है, एंड व्हाट लाइफ स्टेज आर यू एट, एंड बिकॉज ऑफ विच मतलब आपके ये जो सारी चीजें होती है वो चेंज होती रहेंगी. इफ यू आर लाइक अ बिग कंपनी विद अ लॉट ऑफ फर्स्ट पार्टी डेटा, then even through digital you can like really use that first party data to get a lot of like new users who are similar to your existing customers, so you don't even need to go on TV. So it just depends on like what life stage you are at. Some people will just say कि यार मेरे को तो बहुत जल्दी अपना नाम बनाना है, what's the lowest cost per reach, TV पे sponsorship ले लो कर दो. So depending on the objective, the life stage of the company, what data they have, you use different things. मतलब मैं I'll be the last person to say कि यार this is the best thing or this is the worst thing. I think each and every marketing medium has a place in the go-to market. Depending on where you are, you activate or not activate some of these. And it's extremely complex now, Manat Pratesh. Because not just because एक तो इतना डेटा सॉरी कंज्यूमर फ्रैगमेंटेशन हो चुका है कि आपको ये कभी नहीं मालूम होएगा कि मैं अ, एक ही जने को नए जनों को रीच कर रहा हूँ या मैं एक ही जने को 10 बार रीच कर रहा हूँ. माई डेटा सोर्सेज डोंट टॉक टू ईच अदर. माई एबिलिटी टू be present in safe brand environments on digital is somewhat sacrificed, because like you will actually chasing scale, you will go on a lot of places जहाँ पे शायद safe brand environments नहीं होते हैं. तो मतलब काफी कॉम्प्लेक्स हो गया अगर आज की बात करें, मतलब तो मतलब मुझे ये लगता है कि any marketer, whoever he or she is, depending on the life stage, depending on the objective, depending on what they want that particular campaign to do, should be looking at each and every medium. मतलब वो एक इक्वानिमिटी के से देखना चाहिए एकदम, मतलब विदाउट एनी बायस. फिर देखना चाहिए कि ये तीन चीजें will do my job. It doesn't mean the rest are ineffective. They'll be effective at some point of time for some other objective. तो मेरा एक कोई पर्टिकुलर मीडियम के बारे में ऐसा कुछ है नहीं. जहाँ पे वो बोलते But हैं ना, देयर वाज अ वेरी फेमस लाइन किया, यू कांट लाइक shoot a hellfire missile to just gun down one terrorist. Right? That is just like over. I mean, they're just like wasting those resources. So depending on what you do, what you want to do. बट व्हाट मेक्स मी थिंक गौरव यहाँ पे कि इसकी आपका जैसे व्हाट आई रियलाइज कि फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स यू सेड आई रियलाइज फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स एक्चुअल बायर एंड इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट है. हर बायर के पीछे कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, राइट? सो इन एन एनवायरनमेंट लाइक दैट, what could be say some of the dominant strategies?
Yeah, marketing is such a dynamic field that, as per me, there's no single strategy. Mhm. Um, like I spoke about OLX, I spoke about like CarDekho. Like at noise, I mean, like, what I'm just finding out is that more than like, product usage only, it's also a lifestyle accessory, right? So, and lifestyle accessory है तो मतलब कि are you using it to belong to a certain crowd or appeal to maybe the a certain gender? I mean, like, so on and so forth. So how do you use these insights to make sure that you are actually putting this in your narrative? Because तब लोगों को लगता है हाँ यार, this guy is talking about my story. This guy knows me, why I want this particular watch and so on and so forth. अगर मैं यही बोलता रहूँ यार, इस पे तुम्हारे को ऑक्सीजन दिख जाएगा, तुम्हारा हार्ट रेट मालूम चल जाएगा, तुम्हारी स्लीप का मालूम चल जाएगा, दैट्स द फंक्शनैलिटी. बट द होल इमोशनल बेनिफिट, वहां पे अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई व्हाई इज दिस पर्सन बाइंग दिस वॉच और दिस पर्टिकुलर कार. एंड देन you will like also make those people, the influencers or the consumers, a part of the narrative. So कोई strategy नहीं है मतलब प्रत्यक्ष, मतलब ऐसा मतलब for me to say कि do only this thing will be wrong on my part to say that. And maybe that's what actually, to your previous question कि भाई अभी मैं इस नई category में हूँ, when you don't belong to a certain category, you are always questioning each and everything. So I can never ever say कि this is the only thing that works, because Mm. just too many things have been taught to me by different categories. तो मैं अगर एक चीज एक जगह सीखा है तो फिर दूसरी जगह उसका एकदम ऑपोजिट होता है. सो आई एम लाइक, I can never say कि this is the only thing that is super crucial. Everything works depending on what you want to do. So sorry, I don't have a very defined answer, but this is actually the truth what I'm talking about. I think Gaurav, let's talk about brand building. ठीक, आपने बहुत सारे ब्रांड्स बनाए पास्ट में एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन नॉइज एज वेल. व्हाट आर द की फैक्टर्स यू थिंक जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बन सकता है? ये सबसे पहले तो ये चीज है कि what is it that you are delivering to the customer that nobody else is. और वो केवल दो तरीके से हमारे को देखना चाहिए. एक तो फंक्शनल बेनिफिट हो गया कि भाई आज हम जो कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, इज इट ऑल्सो लाइक एबल टू लाइक कनेक्ट अस. इसका ऑडियो काम करता है, वीडियो काम नहीं करता है, मतलब दीज आर जस्ट फंक्शनल बेनिफिट्स, राइट? बैटरी क्या है, दीज आर फंक्शनल बेनिफिट्स. लेकिन इमोशनल बेनिफिट इज द मोर क्रूशियल थिंग in my parlance, in my thought process. Ki by using this product, what is it that I am making you feel? Or by using this brand, what am I making you feel? Which nobody else can. राइट? अगर जिस दिन हम ये समझ जाएं एज अ ग्रोथ प्रोफेशनल और एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस कि भाई ऑन एन इमोशनल बेसिस, ऑन अ फंक्शनल बेसिस, व्हाट इज माय ब्रांड्स जगह इन योर लाइफ, मतलब कि मैं मेरी क्योंकि यार मैं 10 चीजें खरीद सकता हूँ, मैं 10 जगहों को जाके बैठ सकता हूँ कहीं भी. व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर यू? आई थिंक वो तभी होएगा. फंक्शनल इज वन थिंग कि भाई ठीक है, नमक डाल रहे हो, नमक का नमकीन ही होना चाहिए, मतलब वो तो होता ही है. लेकिन कि व्हाट इज दैट टाटा नमक मेकिंग मी फील? why am I actually going for Tata Namak? Because हाँ कि भाई नहीं ठीक है, देश का नमक है या जो भी है, मतलब कि I feel there's an emotional benefit, emotional connect with that particular brand. That's when that functional product or that homogenized product becomes like a brand. And ये क्रैक करना बहुत जरूरी है. हमेशा लोग, मैंने बहुत देखा है कि people only focus on the functional benefit कि भाई यहाँ पे आओ, ये एसी तेज तुम्हारे को ठंडा कर देगा, लेकिन ठंडा तो कर देगा, लेकिन उसका वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है एज ए यूजर? That whole journey has to be walked. I think when you do that, then you start establishing yourself as a brand in the mind of the consumer. Then the media investments, your narrative, everything else is secondary. But just like understanding what I as a brand do for you in your life on an emotional and functional benefit, which nobody else can do, or nobody does it as well as you do. Let me put it this way. If you're able to establish that, then I think you are well on your way to becoming a brand. I think I totally agree with what you're saying. I keep taking this example, पतंजलि का example, right? पतंजलि how they were able to, कैसे उन्होंने brand बनाया कि उन्होंने केवल ये नहीं बोला कि हम आटा बेच रहे हैं, right? They attacked on आशीर्वाद आटा को attack करा, right? And all of the जो भी brands थे वहाँ पे, and they said कि
वी आर इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट, हम Yeah. वेज हैं एंड ऑल ऑफ दैट, वो जो प्रॉपर नेशनलिज्म का जो उस टाइम पे इमोशन चल रहा था और अभी भी चल रहा है, उसको पूरा उन्होंने कैप्चर करा. And that is how probably they were able to establish themselves in the kitchens of India, actually. Kitchens of Bharat, rather, I would say. And that's the Uh, emotional benefit right there, right? मतलब फंक्शनल yep. तो आटे से रोटी बन जाएगी, वो तो सभी कर लेंगे, लेकिन इमोशनल बेनिफिट पे जाके बैठ गए तब पतंजलि became what it became. And it's crazy that Patanjali is now being flagged कि उसमें non-veg भी है, animal extracts भी है, and all of that. Uh, but having said that, मैं ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करी हमने, मैं एक थोड़ा न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सर्विसेज लॉन्च के अराउंड बात करना चाहता हूँ कि what would you say are the best practices strategies for successfully launching something new? I think वही कि whenever you're launching anything new, you have to understand, does typically जब आप launch कर रहे होते हो, you always like want people to believe कि this is a newer, shinier, better version of an existing product, and so you should pay me more. मतलब typically यही होता है एक नए launch का एक understanding. So first of all, you have to justify by yourself कि भाई are all these check boxes being ticked? Is this actually new? Is it actually better? Is it actually shinier? Is it actually delivering better performance? Basis which I will actually command a premium or not. अगर वो नहीं है तो then I think it's going to be a fall flat kind of a thing. The second thing is look at the user journey. If it truly is a new product altogether. जैसे let me give you an example. जैसे Dyson के जब products आए थे 10 से 1 साल पहले इंडिया में, जो भी 7-8 साल पहले जब भी आए थे इंडिया में, मतलब nobody had seen that thing in the country, right? कि भाई पंखा है लेकिन पंखे में ब्लेड्स नहीं है, right? मतलब वैक्यूम क्लीनर जो दीवार पे टंग जाता है, and so on and so forth. So all of a sudden you had nothing, no memory encoding to bank upon, क्योंकि आपके वैक्यूम क्लीनर तो इतने बड़े होते थे, मतलब मसल्स बन जाए उनको उठाने में. पंखे में हाथ डालोगे तो हाथ कट जाएगा, and all of a sudden you're seeing something which is like so cool. So as a user, you had no idea how to use this thing. So now, when you're launching a Dyson product in India, you have to understand कि भाई you might be able to. Some people will actually pay जो पहले 10,000 का वैक्यूम है वो 40,000 में खरीदने के लिए तैयार भी हो जाए, like the higher socio-economic classes. लेकिन how do they actually gain value from it? तो how do you educate them really well? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको नहीं आएगा, ये उस इंसान ने जिंदगी में कभी ऐसा वैक्यूम चीज यूज नहीं करी है. So you'll have to educate them really well. You'll have to give really good after customer support, after sales service to these guys. Warranties, because it's such an expensive product. So if you're not going to be giving a warranty, तो फिर people are not going to be giving you 40,000, 4x of what a normal vacuum cleaner. So depending on what your product is going to be used as or what people know about it, your launches are not just about like कि हाँ चलो एक मार्केटिंग कैंपेन करके डाल दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन उसके बाद जब एक जना उसको यूज करने लगता है, हाउ डू यू हेल्प हिम और हर यूज द टू द मैक्सिमम फुलेस्ट वैल्यू, देन अ लॉन्च इज रियली सक्सेसफुल. और एक और चीज होती है ना प्रत्येश, मतलब एक ये ऑटोमोबाइल में एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सेइंग है कि कोई नई गाड़ी जब लॉन्च होती है, अगर वो पहले 1-1.5 महीने में लॉन्च होने के बाद में रोड्स पे नहीं दिखती तो दैट गाड़ी इज गोना बी अ फेलियर. So it's very crucial for that launch to go well, in order for you to actually recoup all your cost in R&D, go to market, and so on and so forth. The launch तभी successful होएगा when you'll actually understand how people are going to use it. अगर उनको आता है तो चलो इतनी effort मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनको नहीं आता है, एकदम ही नई चीज है, तो you will have to be there after sales also with them. Uh, तो आई थिंक लॉन्च, और फिर मतलब वही होता है आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका यूजर कौन है, आपका इन्फ्लुएंसर कौन है, इनके हिसाब से आप मीडिया बनाएंगे. लेकिन यही है कि, और एक और चीज़ है प्रतेश, मे बी द लास्ट थिंग दैट आई विल से अबाउट लॉन्चेस, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपका ऑलरेडी, द पीपल हु विल ऑलवेज टॉक वेल अबाउट यू आर पीपल हु आर योर ब्रांड एडवोकेट्स, जिसका ये मतलब हुआ कि जिन्होंने आपका प्रोडक्ट पहले खरीदा एंड हु आर वेरी सेटिस्फाइड विद यू. How are you leveraging your brand advocates or your power users so that they also talk to 10 other people in their network about the new product that you're launching? So इसको हम यूजुअली हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो हमारा ऑलरेडी कन्वर्टेड यूजर है, लेकिन those converted users have the power to get you 10 new users. So when you're launching, use your power users, use your brand advocates, use your really loyal users very well.
like, hey, we are launching this thing. We want you to have the first feel of it. What do you think about it? And once, like the car that I drive, I love that car, right? And um, whenever that, if that manufacturer were to sell another, make another launch, they should talk to me because I love my car and I'll be able to talk about the new launch very, very positively. uh, Hmm. and this is like, I'm telling you, like a real thing, not like, कि ऐसे में कोई theory में, मतलब कि that's just the way the whole thing works. So how do you use your brand advocates so that आगे से आगे वो आपका काम कर रहे हैं rather than you only? I think these are three, four things. I think that was a brilliant and very unconventional discussion, Gaurav. That's all the time we have. Thank you for coming on this show. I just want to understand, let's say कि हमारे users आपको reach out करना चाह रहे हैं, what would be the best way to reach out to you? Twitter, LinkedIn, where? LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn would be the I'm best. not on Twitter. I'll put your LinkedIn profile in the description notes. Thank you, Gaurav. Thank you for making it to the show. No, Pritesh. It was great fun. Yeah, I think you asked really good questions. You made me think, and yeah, it was just great fun jamming with you. So yeah, thank you for inviting me. Awesome, man. Guys, so if you enjoyed this, it would mean a lot to me if you subscribe and share your thoughts and the guests you want. And आपको ना हमारे कम्युनिटी के लिए लिंक्स मिल जाएंगे नोट्स में. You should join for brilliant networking and participate in the upcoming events and for connecting with the podcast guests. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में.